Then, so since we are revising, so here also like we have seen one of the example where we have passed the argument inside a function call, inside a function call. So this is somewhat like, so we have seen one of the example, right? One that is using of input, right? Taking an input like this. So if I run this, it will ask me some input like 111. So I will get input as 111, right? Input function. So this is similar to that. That you are adding a values for this particular function manually, like calling you are calling it, right, instead of specifying the values inside a function. So if you specify a value inside a function, those values called local variable. If you specify the values outside a function, or like for calling directly in the, in the method or a function, that is called as those values, or those variables are called as global variable. Okay. Then we have seen if we have passed three arguments, so these are called as arguments. Okay. These are called as arguments or parameters. You can see parameters. So these parameters needs to match the calling, right? So it is like a phone call. We are still saying a calling, but it is like a phone call where like, so this number has to match with this number, right? So if these are or three, like you cannot go for two or four or five. Okay, you have to go for three. Yeah. So here also you can see there were three arguments needs to be passed, but we passed four, right? Positional arguments. So these are called as positional arguments. Okay. So this is the one of the type of arguments that is called as positional arguments. Then we have seen some examples like for multiplication also. So this is one of the example. So a into b. So and we are passing a and b. Okay. A comma b. Simple. And we are getting the value of c. Similarly, you can call any function in another function. So this is also a valid. Like this is a function now, right? So we have seen like uh, print function or return function you are using anywhere. Similarly, this whichever function you make. So this is a custom function as of now. So you can also use your custom function anywhere in the code. Okay, like provided that it makes sense. Okay, provided that it makes sense. So so this is it. Then we have also seen like either directly passing these value inside a calling function. You can specify outside also, right? Outside also. Outside meaning it has to be just above or before this function. You cannot specify inside a function, or you cannot specify these value outside this calling function line, right? So this is also we have seen like here we call these arguments or variables after the function calling. So we did not got any output. Most of the time we get the what you call, let's we get the error. We should have got the error, but it was taking some values from the past function xyz, right? So that's why it was not printing anything or not showing an error. So this is how it is like why we got the output as x is not defined, because like Python runs code line by line, right? So first this line run, so there was nothing to run here, nothing to run, nothing to run, nothing to run, and then this line got ran. Okay, but here it asked for x variable, right? This one, but x is not defined yet. X is defined after, so that is why it threw error, right? It threw error. So this has to come before. Yeah, this has to come before, right? Then a simple function I created. So here also we have passed these variables just before calling a function, right? And this is a function where a and b we are passing ij. So you can also, you don't really have to match this a and b name. Okay,
You can pass anything, but there has to be similar number of arguments, similar number. So if these are two, we need to pass only two, not less, not more. Okay. Then you can also specify these variables outside this function. Outside this function anywhere and before this is fine, right? Because if you specify inside this function, so those will called as local variable, and you cannot access local variable to entire um, workbook, right? Entire Jupyter notebook. So we have seen few examples key this doesn't work. So if I run this, it will give us error. Similar, you cannot call a function before defining a function. So this also gave us error. And very specially, we have learned what is global variable and what is local variable, kind of repeated, because in the list also or a string, I am not sure, we have also seen this. So this is a local variable which is defined inside a function. Okay. So any variable which is defined inside a function is called as local variable. Any variable which is defined outside a function. So this is a function, right? So this is a function. So you can specify outside here also or here also. Okay. But provided that it has to define before calling a function, right? It has to define before calling a function. So this is called as global variable. Okay. Then we have seen how to make a function global. Okay. How to make a function global, and here is the example. Right? Here is the example. So if you have some local variable and you want to access the local variable outside a function, ठीक है? तो अभी मैं इसको comment out कर देता हूँ. For example, अभी ये है नहीं, ठीक है? If I run this, I will get the output as 3 because the smallest number, right? So if I call this A, I get A, right? But if I call this Z, I should not get Z because Z is a local variable. Okay, this is a local variable. But if I make it a global now, so I am running this again. So this is global. Again, global variable A, we got it. But now if we run this, we get a value of Z also because now it is a global variable. Okay. So any variable which is inside a function which is a local variable. So ठीक है पहले ये local variable था. So its scope was inside this function only. इस function के अंदर पूछोगे तो मिल जाएगा ये. ठीक है. How we can check inside a function, you can say print z. Okay, print z. If you say like this, if you print, you get this extra 3, right? Let me just add some text there. Z value. Yeah, z value. So run this, you can see z value. Okay, so you can add or check inside a function of z value if it is a local variable, that is acceptable. Yeah, but you cannot access outside function like this. Okay. Once it is a global variable, once it is a global variable, you can ask it anywhere. Okay. But not in the second file, but in the same file, right? Right. So these are Jupyter notebooks. So inside Jupyter notebooks, you can ask, but when you create a functions, like when we will create these py files, okay. So going ahead, we will see how to make connection from one file to another file. Okay. So when we will work on the projects. So this was, I think, about it, and this was the homework, right? This was the homework. So everyone got it what we have learned till now. Everyone got it what we have learned. If got, type yes, and we will also see some more examples. Like we will not kind of leave it. Type yes in the comments, and also drop these homework questions. So try to solve this. Like yes, 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 yes. Great. बट होमवर्क तो रह गया ना. होमवर्क जो होम में करना था, राइट?
तो लेट्स ट्राई टू सी, अभी इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई विल सॉल्व दिस, यू गाइज नीड टू सॉल्व द अदर। ठीक है, सो आई विल से डेफ स्क्वायर। सो मेरे माइंड में क्या रहेगा कि ऐसा हर एक, मैं ऐसा फंक्शन तैयार करूं अगर जिसमें मैं कुछ भी, है ना, कि कुछ भी वैल्यू डालूंगा तो उसका मुझे स्क्वायर मिल जाए। ठीक है, उसका मुझे स्क्वायर मिल जाए, दैट इज माई लॉजिक। ठीक है, so now I have defined a function which is called as def square। ठीक है, सिंपल है। एंड डेफ स्क्वायर, और उसमें मैंने एक आर्ग्यूमेंट पास कर दिया x। x कह लो या a कह लो या j कह लो, है ना, कुछ भी कह लो, y कह लो। ठीक है, I have added y as an argument, and now I see this is my formula, like I am saying y का square, like y to the power 2 is my formula। ठीक है, this is the formula, right? अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ठीक है, एंड y इक्वल्स टू 2 कह दूं, y इक्वल्स 10 कह दिया मैंने। ठीक है, सो y इक्वल्स टू 10 एंड y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100। राइट, तो आई नीड टू स्टोर दिस रिजल्ट समवेयर, विच इज, मैंने इसको स्टोर कर दिया x में। ठीक है, x में स्टोर कर दिया। So now if I ask x, I get the value of y square। ठीक है, तो सिमिलरली ये चीज मैंने यहाँ पर की। आई हैव क्रिएटेड अ वेरिएबल जिसमें मैंने इसका रिजल्ट डाल दिया है। ठीक है, नाउ y इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर। ठीक है, अभी एक्चुअली यहाँ पर डिफाइन कर दिया मैंने, बट फॉर एग्जांपल y इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर। ठीक है, तो इफ आई नाउ कॉल दिस फंक्शन दैट इज स्क्वायर ऑफ, फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए 11 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, 11 का स्क्वायर चाहिए। इफ आई रन दिस आई विल गेट 11 का स्क्वायर। If I need a square of 113, if I run this, I'll get 113 ka square. If I need a square of 1134, run this, I will get whatever the square. So this is how you can make functions in your code, so that when you kind of, like, you can reuse it anywhere, right? You can reuse this anywhere. So for example, now you want to add, like, def add squared स्क्वायर्ड वैल्यूज। ठीक है, ऐसे मैंने कुछ फंक्शन कर दिया और उसमें ए कॉमा बी बोल दिया मैंने। ठीक है, सो नाउ इंस्टेड ऑफ दिस, ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग हियर कि ए का वैल्यू है कुछ ए का स्क्वायर, बी का वैल्यू बी का स्क्वायर। आई कैन से ए का वैल्यू इज स्क्वायर ऑफ ए। ठीक है, स्क्वायर का स्पेलिंग गलत हो गया गाइस, स्क्वायर ऑफ ए एंड आई का स्क्वायर ऑफ बी। स्क्वायर ऑफ, सिंपल है। तो दिस फंक्शन आई एम यूजिंग सिंपली, जिसमें बस ए एंड बी मैंने पास कर दिया एंड इनका एडिशन मैं कर रहा हूँ। ठीक है, so now if I want to call this function I will say add square value 10 comma 20। so क्या होगा यहाँ पर, what will happen is this 10 will go here, 20 will go here, so basically 10 will go here, 20 will go here। ठीक है, so 10 का वैल्यू हो जाएगा 100। ठीक है, 20, 10 का वैल्यू जाएगा 100, 200 का, 20 का स्कोर हो जाएगा कितना, 2 2 4, 400। ठीक है, तो इनका एडिशन करना है, दैट विल बी 500। बट वी हैव यूज्ड अ फंक्शन, ये हमारा कस्टम फंक्शन, उसके अंदर वी हैव यूज्ड कस्टम फंक्शन। ठीक है, इफ वी रन दिस वी शुड गेट 500। ठीक है, so this is how you can make a use of functions inside a function, your custom function, this is the function that you have made। ठीक है, तो अगर मैं इधर ये एक्चुअल में क्या रहेगा कि बी स्क्वायर स्क्वायर 2। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला था। ठीक है, ये एक फॉर्मूला था, उसको नाउ यू हैव कन्वर्टेड इनटू अ फंक्शन। ठीक है, क्लियर है एवरीवन? इफ दिस इज क्लियर, टाइप यस, someone tried this। so def of cube x raised to 3, that is the cube का formula, you stored it into the a
फिर रिटर्न ए, देन यू सेड डेफ क्यूब, ये तो गलत है, ठीक है। लास्ट वन इज डेफ क्यूब, ये भी गलत है, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज राइट, द कॉलिंग ऑफ फंक्शन इज समवॉट रॉन्ग, ठीक है। इतना ही राइट है, ठीक है, इतना ही राइट है। तो एनीवन एल्स लाइक अदर्स आल्सो टाइप राइट ट्राई टू कोड दिस। तो ये सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस वन, ठीक है। तो वन ऑफ द स्टूडेंट ट्राइड दिस, ठीक है। तो और यहाँ पर स्पेस नहीं रहेगा, एंड दिस विल बी हियर, ठीक है। So we have uh, so this is right, and you can see cube of 10, ठीक है। 10 का क्यूब दे दो and it will give you 10 का क्यूब as 10,000, ठीक है। So the calling of function does not need def. Def means you are defining, ठीक है। इसको सिंपली ऐसा ऐसे समझ लो, def is equals to define a function, ठीक है। def is equals to define a function, सिंपल है, लाइक यू आर जस्ट डिफाइनिंग कि अभी इस फंक्शन का नाम x होगा, x एज इन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्यूब हो सकता है, और यू कैन सिंपली से गेट गेट क्यूब हो सकता है, ठीक है। यू कैन से एनीथिंग, गेट क्यूब हो सकता है, इट स्टिल गिव यू एन आउटपुट। 2 का क्यूब रहेगा 8, दिस इज हाउ इट विल वर्क, ठीक है। एनीवन ट्राइड, एनीवन एल्स? नो वन एल्स ट्राइड, बट anyways, like, are you getting this or not? That is more important, but solving these problems also important, ठीक है। तो एक सिंपल फंक्शन क्रिएट करके दिखाओ, आई विल, सो आई कैनॉट रियली गो अहेड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सिंपल फंक्शन, क्रिएट अ सिंपल फंक्शन, कुछ भी, लाइक कुछ भी, एनीथिंग, एंड ड्रॉप इन द कमेंट्स, जिसमें what are the things that are needed. The very first thing is define a function, ठीक है। define a function, ठीक है। once you define a function, define, like, add code in it and return the value. So whatever the value of this code is, रिटर्न कर दो, ठीक है। एंड उसके बाद क्या रहेगा, कॉल अ फंक्शन, ठीक है। ये चार चीजें यू हैव टू मेंशन, ठीक है। डिफाइन अ फंक्शन, ऐड अ कोड, return whatever the output is, and call a function. Try to write any simple function. Everyone has to do this. अगर नहीं करोगे तो फिर आगे नहीं जा पाएंगे, एवरीवन। गलत आया चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत आया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मोहम्मद अमजद, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, थैंक यू मोहम्मद। Try to attend the class every morning 8 to 9. So he tries it, get some x y, a equal to, and you are returning a, that is right, and get some, और इसके बाद you should write like get some और x and y की वैल्यू, like let's say 4, 5, ठीक है। So calling a function is should be like this, or you can specify a value of x comma y or a comma b or whatever. Other students try it, everyone try to copy, like, what he is doing, okay. What he is doing, he's just defining a function, adding some code like x plus y, whatever you can say, right. Return a and get, calling a function. We cannot go ahead, guys.
ठीक है। एक एक फंक्शन मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ, देन ट्राई टू, अच्छा समवन आल्सो ट्राइड। सो डिफाइन माई डिवीजन, ठीक है, माई डिफ और x and y is the variable, then y equals to x divided by z is the division of these two items. Then you return the y, whichever y values you stored, and you call the function. This may you said ki 9 and 3, so output is also 3. So this is right. This is a good code. Provided that यहाँ पर एक excessive space हो गया ये वाला, but anyways otherwise it's good. And ये return भी इसके line में रहेगा by the way, but ठीक है. Then he said multiplication, this multiplication and this is right. यहाँ पर एक excessive space हो गया, but otherwise this is right. यहाँ पे भी excessive space हो गया, this is right. एक यहाँ पर indentation right नहीं आएगा anyways जब paste करोगे, but these are right codes. ठीक है. For others to understand more, like let me just add create one more function. Similar, like I would say uh, anything like print print function. ठीक है. ऐसे ही मैंने I have created a print function जिसमें I am passing a, b and c. ठीक है. a, b and c. इसमें I am just saying print, you know, let's say numbers are, okay, print numbers are, comma a, comma b, comma c. I'm just saying कि ये तीन नंबर प्रिंट कर दो. That is my function. I will say print function और उसमें I will pass these value, like मैंने for example कुछ values ऐसे सेट कर दी x y z. ठीक है. x y z and I am defining a value of x y z as 1 comma 5 comma 9. Okay. And if I run this, I will get numbers are 159. Okay. It, this simple, right? You can write any function. So try to write it, guys. Try to write a function. Similarly, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ. ठीक है. ऐसा रिटर्न कर दो a, b, c को, a, b, c को. ठीक है. और यहाँ पर इंस्टेड ऑफ एक्स वाई जेड आई कैन राइट 1, 3, 2. ठीक है. तो आई विल गेट दिस, ये प्रिंट आउट हो गया, रिटर्न वाला ये हो गया. ठीक है. तो रिटर्निंग इज यू रिटर्न वॉट एवर द आउटपुट यू गेट. सो यहाँ पर कुछ वर्किंग हो नहीं रहा है, देर इज नथिंग टू वर्क, सो दैट इज हाउ वी आर गेटिंग दिस, राइट. ट्राई टू क्रिएट अ फंक्शन बाय योरसेल्फ. So someone also tried something. So get squared, get square a and b. So you stored a value x a into b. So this is a multiplication. You are returning a x. ठीक है. तो ये small and capital नहीं होना चाहिए, but fine. And you say get square के अंदर you need to pass these values a comma b. जैसे यहाँ पर pass किया multiplication. Let me just take this example. ठीक है. Some improvement points here, guys. ठीक है. Some improvement points. First improvement point is def is small def. ठीक है. So Python is a case sensitive language. ठीक है. What do you mean by case sensitive? Like you cannot really mention the values in the small or capital, right? So it has to be, so def function is in the small letters. You have to use it in a small. Okay. So maybe your typewriter has done that, but anyways otherwise this is it. ठीक है. You cannot specify any function like this, like कुछ तो उसके उसको वो connector चाहिए. This has to be single word. Okay. This has to be single word. Third improvement is there should not be any space in the your function and this parenthesis. ठीक है. Fourth is you need to specify this colon. Okay. You need to specify this colon. Then this has to be here, but anyways since you are typing, so this is fine. You either
specify like space or not, that does not matter, okay? But single space is acceptable. Okay. Then again this return is in the small return, ठीक है? और ये x और ये x अलग है, ठीक है? This is a small, this is a large, huge, capital. So you can also specify capital. Whatever it is, you need to specify everything. Okay. Then this get function needs to be here at the start, and again this get function should be in the same character. Like it has to be small in case, and you need to pass these variables like a comma b. So क्या रहेगा in your case 10 uh, or 10 comma 10, right? 10 comma 10. Why 10 comma 10? Because a into b should be 100, right? Because you are expecting output as 100. If you run this, you'll get output as 100. Okay. So this is how, like, these are all improvements you can do when you write next time. Okay. Anyone else? Anyone else? Try to write a function. Okay. This is like a nice way to create your own function in a lifetime, right? So those who have tried, kudos to them. Those who are trying, try to do it. Okay. So now you will tell me whether the code is right or wrong. Okay. Whether the code will throw error or not. And let me just write a new one. Okay. First is you just have to say error or give question. हाँ. Question देते हैं, ठीक है. Error, error आएगा या success आएगा, whatever, what output I will get, ठीक है. So I will say get even number, ठीक है. Get even number, and I'm just passing a list, ठीक है. So you can also pass the list. So I am just saying if इसको मैं I कर देता हूँ, ठीक है. If I is, if I क्या था formula guys? If I, no, if modulus of n modulus 1 is equals to 0, n modulus 1 is equals to 0, list 1 dot append n, ठीक है. This one dot append n, defining n here is equals to 0, ठीक है. अभी list 1 है नहीं यहाँ पर, so let's create a list 1, ठीक है. List 1 is equals to list, ठीक है. Someone is trying to question n modulus. Yeah, this is a formula. This is a formula. जैसे a into b is a formula, right? So n modulus, so 1 है या 2 है? Okay, 2 है, 2 है. Okay, okay. n modulus 2, right? So हम कह रहे हैं कि जो भी n नंबर हम पास करेंगे, ठीक है, अगर उसका मॉडुलस 0 रहा तो उसको इसमें अपेंड कर दो, ठीक है. गेट अ इवन नंबर, बस इवन नंबर हमें चाहिए, ठीक है. So I am saying we get a even number, right? And I am passing 1 comma 3 comma 4. Okay. So tell me what is the output here, guys. Okay. Tell me what should be the output. Tell me what should be the output. 4. Someone is saying 4. Student saying 4. He says error. He says 4. Okay, two answers. Some more would like to think. क्या हो सकता है? What can be? What can be there? Right? Or error because n is 1 and there are 4 inputs. There are 4 or 3 inputs.
So this is right. Right as in ये error ही देगा. Right? It will throw an error. Why it will throw an error? Because arguments. You check here, guys. So you check here. First is ये बस एक ही number ले रहा है. It is just accepting a single number. I don't care like कि यहाँ पर क्या हो रहा है. मैं बाद में देखूंगा. I will first look whether the positional arguments that I am passing. So these are called as positional arguments. So ये this is expecting only one number. So this will give me an error. ठीक है. So this has to be only a single number. ठीक है. This has to be only a single number. ठीक है. Now again tell me मैं इसी को modify कर रहा हूँ. ठीक है. I am modifying the same. अभी I am saying this one. और ये ऐसे तो work नहीं कर रहा है. This one. लिस्ट कैसे पास करूँ मैं? Okay. So I am saying this want to say this. So अब क्या होगा guys? What will happen now? What will happen now? ठीक है. Just quickly, what will happen now? If you think error, type E in the comments. Otherwise, what output you think in the place? So we are not returning anything by the way. So we should say return list one. ठीक है. You should say something, right? Return कर दो कुछ तो कर दो. So let me just run this one. Any answer 4 4 4 4 4. Actually ये नहीं देगा 4. Why? Because this is acceptable because यहाँ पर एक argument चाहिए. We are passing a single argument, right? But this will not work because if n list में n तो है ही नहीं. List है ना डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट है. So I have to say for I in n. For I in n को यहाँ पर डाल दिया मैंने. So if I write like अरे यार answer for the type yes for percentage list and int. So for I in n, so n क्या रहेगा? Let us print n here. So n is this, right? So we will say for I in range of n. So now तो हमें n चाहिए. n तो ये है. n यहाँ पर आएगा. तो I will say I and इसको फिर से ट्राई करके देखते हैं n से. अभी नाउ आई एम डिबगिंग दिस. ठीक है. मैंने गलत कोड लिखा है. आई वांट टू नो कि क्या है, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग. ठीक है. तो कुछ इस तरीके से यू कैन फिक्स दिस. बट ये लॉजिक यू नीड टू अंडरस्टैंड. लाइक जब आप प्रैक्टिस करोगे सो यू विल समहाउ गेट टू नो कि हाँ व्हाट इज हैपनिंग. ठीक है. सो वी वर पासिंग अ लिस्ट. ठीक है. सो लिस्ट में से हमें अगर एक एक नंबर चेक करना है तो वी नीड टू चेक द लिस्ट. चेकिंग मीन्स आई यूज करना, फॉर लूप यूज करना होगा. तो फॉर लूप में क्या होगा? दिस आई विल विजिट ईच एंड एवरी नंबर. I will visit each and every number like this, and then we can divide or find the modulus and then append. Right? So this is how you can do it. So passing a list here, and then if I modulus of 0, then append n नहीं होगा, यहाँ पर append I होगा. ठीक है. And if I run this, I will get 4 as output. ठीक है. So your thinking is define n equal to 369. ठीक है. इसको भी करते हैं. ठीक है. So now this is a right code. ठीक है. Now this is a right code. So अभी मैं
Since this is the right code, I am passing what he has said, N369 369। तो अगर मैं इसको करता हूँ तो आई विल गेट 6 एज अ इवन नंबर। ठीक है, एक अलग फंक्शन करते हैं या फिर इसको उठाते हैं, इसको उठाते हैं एंड इसको उठाते हैं। n equal to 369, so this should also I think throw an error। ठीक है, if I pass like this, ठीक है, this should also throw an error। that is what my thinking, because n को तुम थ्री चीजें पास नहीं कर सकती, यू कैनॉट पास अ सिंगल वेरिएबल थ्री थिंग्स। ठीक है, यू आइदर हैव टू से एन एम एन एम एन, क्या होता है, एम एन एल होता है। ठीक है, कंसिडर दिस। ठीक है, so now this will work because it will just take n का वैल्यू। ठीक है, it will just take n का वैल्यू, और ये दो दो चीजें तो लेगा ही नहीं। ठीक है, and since we are not returning anything, I have to say return list one, तो हमें मिलेगा empty list। ठीक है, because थ्री इज, यहाँ पर सिर्फ थ्री जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ओनली थ्री जाएगा, ये एम एल जो रहेगा ये नहीं जाएगा। बट if I add ml here also, m comma l here also, I also have to add ml here also। now these will consider those value। ठीक है, बट इस कोड के अंदर यूज नहीं कर रहे हम इसको। हम ऐसे कर सकते कि प्रिंट रिटर्न में ही लिस्ट m comma n। ठीक है, ऐसे कर दिया तो फिर आ जाएगा m comma n। so you have to either use these somewhere, लेकिन फॉर्मूला लाइक लॉजिक ये है कि यहाँ पर जितने आर्ग्यूमेंट्स है, यू नीड टू पास द सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, थिंक लॉजिकली। ठीक है, n को एक वेरिएबल को यू कैन नॉट असाइन थ्री वैल्यूज। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ऐसा होता है n इक्वल्स टू थ्री, m इक्वल्स टू, ये काम नहीं कर रहा है, सिक्स एंड l इक्वल्स टू नाइन। ठीक है, so this is the meaning of this। okay, all right, so append m, हाँ ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं append n। पर ये कुछ इस तरीके से करना होगा, लाइक यहाँ पर एक सिंगल कंडीशन है, n चेक कर रहे हैं m और l भी अपेंड कर दे तो शायद, लेट मी जस्ट चेक, अपेंड ही नहीं होगा इस, अपेंड ही नहीं होगा। you can append single or multiple values actually। extend कर दो तो extend like, it will check only n, so it has to check, it has to check m also। like अगर मैं m कर दूं तो what error we got, extend नहीं आएगा, extend, but still we get an error। positional arguments 3 given, 3 नहीं दे सकते guys। ठीक है, so this is how it will take an m। so logically एक तो तीन लूप चला दो, if m equals to this, if n modulus of 2 ना equals to 0, फिर यहाँ पर लिस्ट वन में फिर से अपेंड कर दो, है ना, लिस्ट वन में अपेंड कर दो। तो लाइक आप जितना डेप्थ में जा सकते हैं कोड लॉजिक, लाइक ये जो लॉजिक रहता है ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। देन आई विल ट्राई टू डू दिस। तो एन तो थ्री है इसलिए तो आएगा ही नहीं, एम सिक्स है इसलिए आ गया। ठीक है, एम सिक्स है इसलिए आ गया। तो अगर मैं इसको टू कर देता हूँ, तो टू हैज अपीयर्ड। ठीक है, तो दो लूप चला दिए, दो फॉर इफ एल्स स्टेटमेंट चला दिए।
ठीक है, you can try to experiment in like how much deep you need to add more and sorry if condition or need to create a loop. अच्छा ये समझा ही नहीं, लिस्ट क्यों आया है, लिस्ट क्यों आया है बिकॉज वी हैव स्पेसिफाइड अ लिस्ट, दिस लिस्ट, तो ये लिस्ट है ना, तो हम इस लिस्ट में ये जो लिस्ट है इसके अंदर अपेंड कर रहे हैं, अपेंड क्या होता है कि एडिशन कर रहे हैं, अगर ये कंडीशन मैच होता है तो वॉट एवर द नंबर वी आर गेटिंग, सो अभी क्या है m है, ठीक है, तो m goes here then m goes here then m goes here, ठीक है, तो ये m चेक होता है कि whether this is the modulus is zero, if it is zero then it gets added here, then it gets added here and then it gets returned here which displays here, तो इस तरीके से पूरा कोड घूम रहा है, ठीक है, पूरा वैल्यू घूम रहा है, it is passing through multiple things. All right, so if I try to do this more multiple times, then you will probably get confused. ठीक है, so practice it home, घर पे ट्राई करने का सोचो, ठीक है, कुछ और yield फंक्शन देख लेते हैं क्विकली, ठीक है, तो yield फंक्शन देख लेते हैं क्विकली या रिटर्न देख लेते हैं and then yield देख लेते हैं, ठीक है, तो रिटर्न फंक्शन जो हम ऑलरेडी देख रहे हैं, दिस रिटर्न इज ऑलरेडी हम देख रहे हैं, तो रिटर्न का काम क्या होता है, let's say def even again even num, ठीक है, even num, और उसमें if I pass some no list वन कर दिया, ठीक है, मैंने जस्ट आई एम जस्ट वो बस एक वेरिएबल है, ठीक है, दिस इज जस्ट अ वेरिएबल नॉट अ लिस्ट, एंड इफ आई से रिटर्न ओनली, ठीक है, और मैंने कुछ भी नहीं कहा उसके अंदर, एंड इफ आई से इवन, और इसके अंदर मैं एक लिस्ट पास कर दूं 1,1,2,3, what will happen, it will return nothing because we are not returning anything, but if I say uh, if I say list 1, then it will probably return the list, ठीक है, रिटर्न का इतना ही है, लाइक इससे ज्यादा और कुछ है नहीं, जैसे और एक मैं फंक्शन आपको दिखा देता हूँ, लाइक डेफ इवन नम फॉर एग्जांपल, ठीक है, जिसमें मैंने कहा कि एक नंबर भेजना है, को लेट मी जस्ट change it to Python, then what I am saying, if the number, if the number modulus 2 is equals to 0, then return even, ठीक है, return even, else return odd, ठीक है, else return odd, so ये बस strings है which I want to return, ठीक है, so if I call this function even num and इसमें अगर मैं कोई भी एक नंबर डाल देता हूँ 111 डाल दिया, ठीक है, so now what will happen, this this 111 go will here, then again it will get checked here, अगर ये condition true हो गया तो ये प्रिंट होगा, ठीक है, लेकिन 11 डिवाइड बाय ट्रिपल वन डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ 2 इज नॉट 0, इट्स 1, तो ये फॉल्स हो जाएगा, देन इट विल कम हियर एंड ये रिटर्न होगा फंक्शन, so that should be a odd because this is a odd number, right, so this is how return means whatever you add, return वो रिटर्न कर देगा, आउटपुट दे देगा, ठीक है, then there is this another function which is called as yield, ठीक है, रिटर्न की जगह इसको यूज करा जाता है, ठीक है, रिटर्न की जगह इसको यूज करा जाता है, तो फॉर एग्जांपल मैं इसको ही यूज कर लूँ इसी फंक्शन को, इंस्टेड ऑफ रिटर्न इफ आई से yield yield, अच्छा भाई, ठीक है, yield कह दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पर, so now if I run this, what will happen, it will give me an object, तो इसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक है, अभी रिटर्न क्या दे रहा था, रिटर्न वाज डायरेक्टली गिविंग मी द वैल्यू, ठीक है, now this is returning me or this is yielding me an object, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट इसको अनपैक करना होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर ये वैल्यूज होती है, दीज आर ऑब्जेक्ट्स वैल्यू, तो इसको अनपैक करना होता है, सबसे पहले इसको स्टोर करेंगे एक वेरिएबल में, so let's say I have said
बड़ा वाला x is equals to this, ठीक है, this. So now running this again. So अभी क्या होगा कि मुझे अगर इस x के अंदर क्या है वो देखना है, तो मैं x जैसे देख सकता हूँ, लिस्ट ऑफ x. तो कुछ ऐसा आ जाएगा आउटपुट, ठीक है. इसके पहले हमें क्या मिल रहा था, ये एक ऑब्जेक्ट मिल रहा था. इस ऑब्जेक्ट को ओपन करने के लिए यू कैन आइदर यूज लिस्ट, ठीक है, लिस्ट यूज कर सकते हो, या फिर देयर इज ऑल्सो फंक्शन कॉल्ड एज नेक्स्ट. आई एम नॉट श्योर अगर ये वर्क करेगा यहाँ पे, नेक्स्ट ऑफ एक्स. तो अगर नेक्स्ट आइटम इसमें रहा तो ठीक है, तो नेक्स्ट इज ऑल्सो देयर. तो नेक्स्ट में क्या होता है, अगर इफ दिस फंक्शन हैज मल्टीपल आउटपुट्स, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 22 कर दूं और ये चलाऊं, तो ये अभी इवन दे देगा द नेक्स्ट आउटपुट, ठीक है, नेक्स्ट आउटपुट. तो प्रीवियसली इट वाज जस्ट गिविंग एक्स, तो अभी ये नेक्स्ट आउटपुट हम नेक्स्ट से निकालेंगे, ठीक है. नाउ दिस इज रिटर्निंग अ एम्प्टी लिस्ट. सो मोस्टली व्हेनेवर यू डील विद यील्ड, ठीक है, यील्ड, so you use this next function to get the output, ठीक है, to get the output. Okay, getting this. So, आज हमने what we have mostly done is we have done is uh, just practice. इसके अलावा ज्यादा कुछ है नहीं, लाइक दिस इज ऑल इट, ठीक है. इसके अलावा और कुछ है नहीं. कुछ एक और चीज है जैसे वी कैन डिस्कस इज रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं उसको, ठीक है. इट इज कॉल्ड एज रिकर्सिव फंक्शन. ये यील्ड एंड रिटर्न समझ में आया है सबको, यील्ड एंड रिटर्न. someone said need to add more if condition if we have done already. That is right. वो particular उस एग्जाम में, उस एग्जाम्पल में we need to add multiple if and else condition. यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर if and else में भी कर सकते हैं. if and else, if and else, if and else. The whatever logic you keep in your mind, like ये तो मैं बस एक lame code है ये. This is not a right code, a very efficient code. You can always improve any code. ठीक है. This is not the most efficient code. I just wanted to make you familiarize with the formats कि यहाँ पर तुम define करो, यहाँ पर write your code, then return something and then call a function, ठीक है. उसके पहले you can define a variable also. So इसको कहते हैं कि define a, मतलब creating a function, right, creating a custom function. तो उसमें से हम ये रिटर्न वाला जो है ना कि आउटपुट निकालने वाला फंक्शन के बारे में ज्यादा सीखे हैं, विच इज दिस. इफ यू मेंशन नथिंग इन फ्रंट ऑफ रिटर्न, इट रिटर्न्स नथिंग. इफ यू मेंशन समथिंग, इट रिटर्न्स समथिंग. सिमिलरली देयर इज अ सिमिलर फंक्शन जहां पर रिटर्न की जगह यू कैन ऐड यील्ड. सो मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल यूज रिटर्न. आई हैव नॉट सीन एनीवन हु हैज written this yield code, ठीक है. I have worked on multiple projects now और industrial projects, तो कोई yield यूज नहीं करता है. बट if you somehow see someone using this yield function, तो उसको वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है. दिस इज ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के अंदर तुम्हारा रिजल्ट रहेगा. so you have to, if you want to see the result, you can use this next function, ठीक है. नेक्स्ट फंक्शन जो इसके अंदर का जो भी रिजल्ट रहेगा उसको निकालेगा, ठीक है. तो ये रिटर्न एंड यील्ड समझ में आया क्या गाइस? रिटर्न एंड यील्ड, इफ रिटर्न एंड यील्ड इज समझ में आया है तो यस डालो. अदरवाइज आई विल गिव यू मोर एग्जांपल्स एंड मेक यू अंडरस्टैंड. आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. यस, some more yes. I would need some more yes. Some more yes, guys. More examples. Great. So रिटर्न का तो वी हैव सीन, ठीक है. रिटर्न का क्या देखा है हमने कि देयर इज, यू डिफाइन अ फंक्शन, यू ऐड सम कोड एंड यू रिटर्न समथिंग, ठीक है. रिटर्न एज इन ये डायरेक्टली आउटपुट आ जाएगा, ठीक है. तो आई होप लाइक इसका एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं.
इसमें आई एम सेइंग डिफाइन मैक्स नंबर, ठीक है, मैक्स नंबर में मैं लाइक सिंपल ए डाल दे रहा हूँ, ठीक है, ए, एंड आई एम सेइंग जस्ट रिटर्न ए, ठीक है, मैं बस रिटर्न ए कर दे रहा हूँ। एंड इफ आई सिंपली से मैक्सिमम, अगर मैं मैक्सिमम नाम से अगर डिफाइन कर रहा हूँ कुछ फंक्शन, इट डज नॉट नेसेसरी टू यू नो शुड बी द वट एवर इट इज, ठीक है, लाइक बेसिकली इसका फंक्शन मैं बस रिटर्न कर रहा हूँ, वेरी सिंपल। मैक्सिमम का मीनिंग होता है कि मैक्सिमम नंबर दो, बट अगर मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ मैक्स नंबर, डज नॉट मीन कि ये मैक्स नंबर के लिए काम करे, द कोड हैज टू डू इट, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर पास कर रहा हूँ ए आई, ठीक है, ए आई, तो लेट्स सी वेदर इट वर्क्स और नॉट। तो सी इट वर्क्स, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड इज रिटर्न में क्या होगा, ये वैल्यू यहाँ पर जाएगा, देन रिटर्न कर देगा ये वैल्यू। बीच में मैंने कुछ कोड ऐड ही नहीं किया है, ठीक है, ये कुछ लॉजिक ही नहीं ऐड किया, मैं बस सिंपली से जो भी इनपुट आ रहा है वो आउटपुट दे दो, ठीक है। तो रिटर्न का काम ये है कि जो आपको आउटपुट चाहिए, ठीक है, दैट इट डज, जो आउटपुट चाहिए चाहिए वो डायरेक्टली मिल जाता है। बट यील्ड में प्रॉब्लम क्या है, इफ आई यूज द सेम फंक्शन, यील्ड में प्रॉब्लम क्या है, so this is yield का स्पेलिंग गलत, ठीक है। So if I run this, I will get an object instead of जैसे मुझे डायरेक्टली आउटपुट आ रहा था। दिस इज अ सिंपल एग्जांपल जो मुझे देना था, मुझे वहां पर डायरेक्टली आउटपुट आ रहा था, यहाँ पर आउटपुट नहीं आ रहा है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज, मुझे ये पैक्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लाइक रिटर्न क्या करेगा, आपको डायरेक्ट उसका आउटपुट दे देगा। आउटपुट वाज व्हाट, ए आई वाज आउटपुट, ए आई वाज आउटपुट, ठीक है, क्या ही गलत लिख दिया मैं। ए आई वॉज आउटपुट रिटर्न में, ठीक है। बट यील्ड में क्या होता है, ये एक ऑब्जेक्ट देता है, इसके अंदर आपका आउटपुट छुपा है। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, एक अंडा है, यू हैव टू बस्ट इट, इसको फोड़ना पड़ेगा, ठीक है? इसको खोलना पड़ेगा, ये ऐसा बंधा है, ठीक है। पैकेजिंग में आता है, बेसिकली यील्ड का आउटपुट पैकेजिंग में आता है, ये ओपन डिलीवरी है, ठीक है। तो इसको ओपन करने के लिए देर इज अ फंक्शन कॉल्ड नेक्स्ट, ठीक है, देर इज अ फंक्शन कॉल्ड नेक्स्ट, और यू कैन ऑल्सो यूज लिस्ट, ठीक है। लिस्ट तो हमने सीखा है, ठीक है। तो कैसा है, अगर इसको पहले कहीं पे स्टोर करना होगा, अनपैक पैकिंग करने के लिए, सो आई एम जस्ट सेइंग ओपी, ओपी एज इन आउटपुट, ठीक है, ओपी एज इन आउटपुट। इफ आई call op here, okay, if I call op I get the output, right? But now I can say list of op, op मतलब आउटपुट, ठीक है, जो वेरिएबल मैंने डिफाइन करा है। so if I do this, I will get output like this, or I can also say next of op, if I do this, अरे यार next object है नहीं actually इसमें, so if I run again and now if I check, I will get, so this is something like एक बार आपने देख लिया, अभी यहाँ पर हमने देख लिया ना, ठीक है, तो it checks next output, ये next चेक करेगा, there has to be next। अगर ये next आउटपुट नहीं रहा, yield में क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन है जो एवरी टाइम नया नया आउटपुट देने वाला है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स ट्राई टू नेक्स्ट आउटपुट कैसे देगा, so there has to be a loop, multiple outputs sometimes we get, I don't know if इस पे वर्क करेगा या नहीं करेगा, लेट्स चेक। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो द फर्स्ट इनपुट वाज ए आई, ठीक है, द सेकंड इनपुट वी कैन से जेन ए आई, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, देन आई विल गेट द सेकेंड आउटपुट। तो इस तरीके से लाइक पासिंग में ही यहाँ पर अगर मैं लूप लगा दूं कि देयर इज दिस list 1 is equal to 1 comma 2 comma 3, and if I say for I in list 1
ठीक है, फॉर आई इन लिस्ट वन, आई एज अ इनपुट कर दिया मैंने, ठीक है, आई एज अ इनपुट कर दिया। सो इफ आई रन दिस फर्स्ट टाइम आई विल गेट 4, ठीक है, सेकेंड टाइम लाइक यहाँ पर अभी 4 चले गया, लास्ट आइटम ही आएगा, बट देयर हैज टू बी मल्टीपल इनपुट्स सो दैट मल्टीपल आउटपुट्स कैन बी देयर, ठीक है। देन basically the more of idea that you can get is have is yield में, like the underline मैं summarize कर रहा हूँ, yield में क्या होता है that you get an object, ठीक है, that you get an object and you can unpack the object using next function or list function, ठीक है, and return में you directly get an output, so there is this is nothing fancy. So in interview what you can like interviewer can ask you is कि what is the difference between, what is the difference between yield and return, ठीक है, what is the difference between yield and return, so you can say a return function directly returns a value whatever value you ask, ठीक है, exact value, but yield function does not return you a value, it returns you an object. So in order to unpack this object, like open this object, you can either use next function or list function, ठीक है, ठीक है, everyone got this, everyone got this, if you have got this, type yes, because I think it is about time that we close it, close the session. I wanted to complete the recursive function also, but let's try it tomorrow. कल हम recursive function सीखेंगे and हम positional arguments भी सीखेंगे कि different type of positional arguments, और इसको revise भी करेंगे. This is that is also a part of this functions. ठीक है. So if everyone got this, type yes in the comments and also type win with long and in the comments so that I will get the idea that आज का lecture successful रहा. Win 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 win. Yes yes, great great. All right. So just last two things. First is uh, I will share the link of this one, this lecture. So इसका recording यहाँ पर है, ठीक है. थर्ड थिंग इज सब्सक्राइब कर दो, अपने फॉलोअर्स यूट्यूब पे भी बढ़ रहे हैं. थर्ड थिंग इज योर नोट्स आर ऑन दिस गिटहब, इसका लिंक भी एक तो डिस्क्रिप्शन में या चैनल में मिल जाएगा, ठीक है. गो थ्रू दिस ऑल दिस फाइल्स. तो इसको कैसे देखना है, तो सबसे पहले तो यू कैन ओपन दिस फाइल्स, ठीक है, और इसको प्रैक्टिस कैसे करना है आई विल टेल यू. तो ओपन क्या ओपन करना है, गूगल कोलैब, गूगल कोलैब, ठीक है, लिख लो. जो कोई भी नया है इसके लिए सबसे पहले कुछ ऐसा आएगा, इसको लॉग इन कर लो, यहाँ पर लॉग इन कर लेना. वंस लाइक मेरा ऑलरेडी लॉग इन है, वंस यू आर देयर यू जस्ट नीड टू ओपन अ न्यू नोटबुक, ठीक है. ट्राई टू गो समवेयर जहाँ पर न्यू नोटबुक लिखा हो, एक बार लॉग इन करने के बाद तुमको पता चलेगा, ठीक है. न्यू नोटबुक में इसको थोड़ा सा क्रिटिकली देखना, ठीक है, मैं थोड़ा क्विकली बता रहा हूँ लेकिन समझ लेना. ठीक है, तो ये आपका गूगल कोलैब हो गया. इसको हटा दो, रिलीज नोट्स को, और इसको कनेक्ट कर देना, ठीक है. कनेक्शन एज इन जो हम कर्नल कनेक्शन करते हैं ना, ये सर्वर कनेक्शन करता है, ये लाइक ऑनलाइन होता है. जिसके पास भी वीएस कोड नहीं उसकी बात चल रही है, ठीक है. इफ यू डोंट हैव अ वीएस कोड, तो सबसे पहले क्या रहेगा कि ट्राई टू राइट कोड लाइक दिस. ये ऐसा था, मैंने यहाँ से यहाँ कॉपी पेस्ट कर लिया, सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लिया, देख लिया कैसा है, उसको रन कर दिया, अच्छा ये आउटपुट आ रहा है, बढ़िया है, सही है ना. जैसे जाऊंगा फिर और देखूंगा कि अरे यहाँ पर कुछ टाइप लिखा है, ये वाला, मतलब हर एक लाइन बाय लाइन कोड आई विल गो एंड चेक, ठीक है. इधर आऊंगा, चेक करूंगा, दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू व्हाट वी आर डूइंग हियर, ठीक है. बट वीएस कोड में लोकली रन करो, दिस इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड दिस इज ए
This is online. Okay? This is something online. So one thing you can run this also on mobile. ठीक है थोड़ा सा uncomfortable होगा लेकिन अगर if you have a good mobile तो इसमें you can run it on mobile also. But typing and writing a code is very important, guys. Okay? So this is how you can practice and like watch these videos 2x पे चला दो ठीक है 2x पे चला दो डबल स्पीड पे चला दो लेकिन कंप्लीट ट्राई टू कंप्लीट दिस गो थ्रू मल्टीपल टाइम्स 2 बार 3 बार 4 बार जाओ कंप्लीट कर दो और वीडियो का लेंथ 1 आवर दिख रहा होगा लेकिन दैट इज जस्ट 20 मिनट्स मैं स्टार्टिंग में रिवाइज लेता हूँ फिर कुछ एक्सप्लेन करता हूँ देन अगेन रिवाइज करता हूँ ठीक है ऑल राइट दैट्स अबाउट इट टुडे